ख़वातीनो हज़रात, लेडीज़ जेंटलमैन, प्रेसिंग मैटर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ इस्माइल फ़ारूक और ये शो ऑन द माइक आपके लिए लाया है। हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करें और भरपूर हमारी प्लीज़ वीडियोस को आप शेयर करें ताकि और भी फुटबॉल फैंस इस शो को देख सकें और हम आपके लिए मज़ीद कंटेंट बना सकें। आज की एपिसोड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि द पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल टीम इज बैक। सैफ विमेंस चैंपियनशिप 2024 17 अक्टूबर को पाकिस्तान का पहला मैच है और खवातीनों के साथ कोई आम मैच नहीं है। पाकिस्तान व मुकाबला इंडिया 17 अक्टूबर। पाकिस्तान इंडिया के साथ एक ग्रुप में है, साथ बांग्लादेश भी है। पहली दो जो टीमें हैं इस ग्रुप के अंदर वो आगे क्वालिफाई करेंगे नॉकआउट राउंड्स के लिए और बेसिकली टूर्नामेंट का आगाज ही पाकिस्तान वर्सेस इंडिया से शुरू हो रहा है, विच इज अ ह्यूज गेम इन एनी कॉन्टेक्स्ट, इन एनी टूर्नामेंट, इन एनी सिचुएशन। और स्पेशली इस केस में क्योंकि लास्ट टाइम ये टीमें 2-3 साल पहले इनका मुकाबला हुआ था और तब पाकिस्तान की फुटबॉल टीम नई नई शुरू हो रही थी अंडर कोच अदील रिस्की। तो दिस विल बी अ ग्रेट मैच टू सी कि वो टीम किस तरह इवॉल्व की ओवर टाइम और कितनी इंप्रूवमेंट आई है ओवर द इयर्स और पिछले मैच के बनिस्बत। हम इस एपिसोड में इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान विमेंस टीम नेशनल हेड कोच अदील रिस्की से बात करेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ क्या अप्रोच होगी, क्या हम उनको यानी कि इंडिया को सख्त मुकाबला दे सकते हैं या नहीं। हम उनसे ये भी पूछेंगे कि हम इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम से क्या उम्मीद रख सकते हैं, क्या उनकी फैसला साजी में बायस या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है क्योंकि वो कराची सिटी एफसी के साथ जो है वो मुंसलिक हैं, और साथ साथ क्या हाजरा खान जैसे सीनियर नेशनल टीम एक्स प्लेयर्स के साथ बुरा सलूक या डिसरिस्पेक्ट हुआ है या नहीं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, डू वॉच दिस एंटायर एपिसोड एंड डू शेयर इट। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया को भी आप जरूर देखें। उसके बाद हम प्रॉब्ली लाइव स्ट्रीम करेंगे, लाइव पोस्ट मैच रिएक्शन करेंगे, तो डू स्टे ट्यून फॉर दैट। एपिसोड शुरू होने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एपिसोड आपके लिए मैदान लाया है। अभी तक अगर आप शो देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैदान एक रेवोल्यूशनरी पाकिस्तान फुटबॉल ऐप है जो कि आपको मुफ्त में फुटबॉल मैचेस ढूंढने, ऑर्गेनाइज करने, उनमें खेलने का मौका देती है। तो मैदान को आपने सिर्फ मुफ्त में डाउनलोड करना है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बिलो, और आप फुटबॉल मैचेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या फिर अपने इर्द गिर्द जो है वो मैचेस ढूंढ के खेल सकते हैं। अब आपको बुकिंग के लिए कॉल नहीं करना या आपको दोस्तों को इकट्ठा नहीं करना, सिर्फ मैदान की ऐप डाउनलोड करें, साइन अप करें फ्री में और फुटबॉल खेलें। और मैदान जैसे प्लेटफॉर्म्स को भरपूर सपोर्ट करें क्योंकि वो ऑन द ग्राउंड फुटबॉल के लिए काम कर रहे हैं और साथ साथ वो ऑन द माइक हमारे जैसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तानी स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए आवाज उठाते हैं। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन टू द एपिसोड। अदील भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक ऑन द शो। आई थिंक लास्ट टाइम हमारी बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छी डिस्कशन हुई थी, आई थिंक पाकिस्तान वर्सेस तजिकिस्तान वाले मैच के बाद। सो इट्स ग्रेट टू हैव यू बैक। कैसे हैं आप? Thank you so much for having me. I'm well. Yeah, it's always good to be back on your show because it's always football based, and I love it. या एब्सोल्युटली। आई मीन एज जितनी भी साइड पे चीजें चल रही होती हैं मैं कोशिश करता हूँ कि फुटबॉल बेस्ड ही रखूं, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग यू ऑन बिकॉज वी आर फाइनली आफ्टर लाइक अ फ्यू मंथ्स हैविंग टू समथिंग टू टॉक अबाउट पाकिस्तान नेशनल टीम। और इस दफा फाइनली एक साल के बाद वुमेन्स टीम जो है वो ऑलमोस्ट खेल रही है। तो सबसे पहले अदील भाई मैं पूछना चाहता हूँ बिफोर वी गेट इनटू द निटी-ग्रिटीज एंड एवरीथिंग कि एनओसी का एक इशू न्यूज में आ रहा था कि टीम को एनओसी फिर नहीं मिलेगा, ये हमेशा ये मसला चलता रहता है। कैन यू गिव अस एन अपडेट अबाउट दैट? I believe the NOC is done. I think people are working in the background to get it over the line. I think it's been sorted. And inshallah, I think our team is looking good to travel on the 12th, inshallah. So I think ho jayega. I think these things happen. It's a problem from both the sides. So I think we just have to get it right this time. आई गेस अभी हम 10th को रिकॉर्ड करें तो बाय द टाइम ये एपिसोड लगेगी तो आप लोग इंशाल्लाह ऑलरेडी जा चुके होंगे। बट या आई थिंक दैट्स अ गुड डेवलपमेंट। ओपनिंग मैच की अगर हम बात करें दिल भाई, व्हिच इज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अक्टूबर 17 को, जस्ट स्ट्रेट ऑफ द बैट कितना बड़ा मैच है ये? It doesn't get bigger than that, you know. When you're a Pakistan, any Pakistan team, doesn't matter whether it's squash, whether it's tennis or hockey, football, whatever. It is probably the biggest, just because it's the sense of rivalry is there. Even though we respect everybody in sport, but ये हमारे लिए बहुत बहुत ही बड़ा एक opportunity है, एक बहुत बड़ा match है और हमारे लिए this is what we look forward. This is what we train for, basically. So are you treating it doesn't get just bigger like than this.
Yeah, so are you treating it just like a group game or as a derby against a big rival? So from a team perspective, आप उसको किस तरह approach कर रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं इसमें। एक तो हम लोग एक तो ग्रुप स्टेज से निकलने के लिए भी हमने सोचना है कि किस तरह हाउ डू वी गेट आउट ऑफ द ग्रुप स्टेज। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा एवरी मैच इज़ टेकन वन हाफ एट अ टाइम। वी आर लुकिंग एट वन हाफ, द फर्स्ट हाफ, हाउ डू वी परफॉर्म इन दैट हाफ, उसके बाद द नेक्स्ट हाफ। सो सिंस वी ओनली हैव 2 टीम्स इन आवर ग्रुप, सो बोथ द गेम्स जो हमारे हैं बहुत ट्रिकी बन जाते हैं कि हमें अगर गोल डिफरेंस पे आ जाती है बात, या फिर गोल स्कोर्ड पे आ जाती है बात, तो ये सारी चीज़ें एड अप हो जाती है। सो वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि हम किस तरह खेल रहे हैं, कंसीड नहीं करना गोल्स, कितने गोल करने हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स नीड टू बी एडेड अप। द गुड पार्ट इज अ ओपनिंग मैच, सो आई एम श्योर बोथ द टीम्स की जो नर्व्स होंगी वो यू कैन सी इट, बट आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक श्योर दैट वी ट्राई टू कीप अ क्लीन शीट एंड ट्राई टू स्कोर गोल्स एंड ट्राई टू टेक होम द 3 points. That's our basic objective of the game. And ये चीज़ें होती हैं, but of course there's always a sense of rivalry. उन्होंने लास्ट टाइम हमें 3 गोल से हराया था। अभी हमारी टीम उससे बहुत अलग है। आई थिंक इट्स अबाउट, if I were to look at it, it's about 30-40% different team completely. So that should show in this match at least. Yeah, hopefully इंशाल्लाह इसके अंदर हाउ डू यू मेक श्योर एज अ कोच कि आप अपने प्लेयरों को जितना ज्यादा ये ट्राई करेंगे वो दे डोंट प्ले द ओकेजन, सो हाउ डू गो अबाउट दैट, बिकॉज लाइक यू सेड पाकिस्तान इंडिया जहां भी हो Mm-hmm. it has a certain feeling to it. So how do you make sure as a coach, as a manager, कि आप उसके अंदर से वो जो नर्व्स, एक तो साल बाद आप खेल रहे हैं कंपेटिटिवली इंटरनेशनली, ठीक है, उसके बाद आप फॉर एग्जांपल इंडिया के खिलाफ सैफ चैंपियनशिप में खेल रहे हैं, इंडिया ने आपको पिछला मैच रहा था, आप उस चीज को किस तरह एज मच एज पॉसिबल रिमूव कर सकते हैं प्लेयर्स की के माइंड से while they're playing? See, when we talk about ये चीज़ें की बात करते हैं, I think confidence is the most important thing, and confidence only comes preparation के through. तो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज़ के लिए for the last 10-12 days कि हम किस तरह खेलेंगे, हमारी आइडेंटिटी क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है। तो इन चीज़ों पे हमारा फोकस बहुत ज़्यादा है। एंड अगेन होगा, it is going to be nervous for everybody, but the idea is we've given them tools of how to make sure that we can kind of stay composed, stay confident, and deliver what we've executed. हमने जो हमने ट्रेनिंग करी हुई उसकी execution के लिए हमें क्या क्या करना है वो हम लोग उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं. So whether it be putting them in match situations and high pressure situations, to be able to identify कि यार अच्छा इस तरह हो सकता है, 1 man down training, 2 man down training, just kind of get them a lot of pressure during our training sessions to make sure that they are able to perform at that level. And mashallah, touch wood, so far we've done well. और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग इसी तरह प्रिपेयर करते रहेंगे. वी हैव अ फ्यू मोर डेज. हम लोग नेपाल जल्दी जा रहे हैं इसीलिए क्योंकि ताकि हम लोग वी गेट अकस्टम टू द वेदर एंड एवरीथिंग. एंड वहाँ जाके भी हमारी पूरी जो स्क्वाड टुगेदर विल बी ट्रेनिंग. दैट विल बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग बिट वेयर वी कैन have all our players together and we can really perform at the highest level, and just get give them confidence, give them everything. We give them all the information जो इतना दे सकते हैं हम लोग, whether it be through analysis, whether it be through इनकी सेल्फ एनालिसिस जो होती है, ओपोनेंट एनालिसिस अलग होगी इनकी खुद की एनालिसिस के लिए, और क्या क्या चीज़ें हम लोग किस तरह हमारा गेम स्टाइल है उसको खेलते हुए, so सारी चीज़ें हम लोग एड अप करेंगे इंशाल्लाह. these guys will perform well. एंड सो अभी प्लान की आपने बात किया, 100% एग्री बाय द वे कि कॉन्फिडेंस इज बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सपर्टीज और प्रिपरेशन. मतलब जितना आप अपनी महारत आपको अपनी चीज पे होती है उतना ज्यादा यूर कोट अनकोट कॉन्फिडेंट, बिकॉज यू डन इट सो मेनी टाइम्स, यू कैन पुल इट ऑफ. बट अगर हम इंडिया की बात करें, उनकी महारत हमारे से, लेट्स बी ऑनेस्ट, ज्यादा है. They're ranked 67. They're 5-time winners of the SAFF Women's Championship, if I'm not wrong. So I would say, like, let's say, normal बंदा सोचता है कि यार we won't be able to dominate the ball and maybe play the way जिस तरह आप ideally खेलना चाहें. क्योंकि मुझे पता है आप बॉल रखना चाहते हैं, आप प्रोटैगनिस्ट बनना चाहते हैं मैच के अंदर, you want to lead with the ball, you want to attack with the ball. शायद हम इस मैच में वो ना कर सकें. तो आपके ख्याल में क्या ये असेसमेंट सही है कि शायद हम इस मैच में इस तरह बॉल के साथ डोमिनेट ना कर सकें? और कंसिडरिंग दिस, अगर तो ये सही है, आपकी अप्रोच क्या होगी? I think for me as a coach, आप लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को पता है कि I like to have the ball with our team. We don't shy away from that. हम लोग कोशिश फिर भी करेंगे कि जितना ज़्यादा बॉल हम लोग अपने पास रख सकें और डोमिनेट कर सकें सिचुएशंस में, हम करेंगे. एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ये जो टीम है हमारी जो 2022 में स्टार्ट हुई थी और आज है,
इसमें काफ़ी फ़र्क है। तो अगर आप मुझे ये सवाल आपने पूछे थे मुझे पहले भी, एंड आई सेड कि हम लोग 2 साल के बाद देखेंगे कि किस तरह ये टीम खेलेगी। तो अब वो मौका आ गया हमारे पास कि हमारे पास जो प्लेयर्स हैं, हमारे पास जो क्वालिटी ऑफ जो प्लेयर्स इन आवर स्क्वाड, it's good enough to do what we want to do with the ball. But yet again we have to be mindful कि वो लोग भी they are much better than us in terms of getting game time. आपने जैसे बताया उनकी हेरिटेज है कि वो जीते हुए आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, so all of those things we need to consider as well. और उसको हम लोग हम लोग उसको अलग से नहीं रख रहे हैं, हम लोग उसको साथ उसको we keep that in our mind when we produce our game plan. We do keep that in our mind and prepare accordingly. If we don't have the ball in possession and out of possession, we work a lot on both these factors. It's not only that we work in possession and out of possession की बात नहीं करते. We talk about staying, compact out of possession, what type of blocks we want to produce, whether it's a low block, high press, or mid block. We talk about how to transition from in those moments to getting into attacking transition moments. वो चीज़ें भी हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है हमारा. So counter attacks पे होगा focus, quick finishes पे, getting the ball at the back of the net within 3-4 seconds is something that we work on. तो ये चीज़ें हैं, we always work on these things, but again, like जैसे आपने correctly mention किया कि the way I would like to play is to keep the ball as long as possible, dominate करूँ जितना ज़्यादा कर सकते हैं, and then try to find the gaps to overcome their defensive lines. तो ये चीज़ें हम लोग we work on both aspects. It's not only that we're working on one aspect and trying to stick to that. We have to be ready to problem solve at every moment of the game. Absolutely. But like if I were to ask you, what can I expect in terms of okay, you would like to dominate with the ball as much as you can. I applaud that. मैं भी यही चाहता हूँ. This is how I see the game as well. But sometimes obviously it's difficult. So would you be then pressing high? What kind of blocks are we looking at? Are you being flexible in terms of the game situation, the game state? Yeah, can we expect it from just generally you're pressing high against India from their goal kicks. आप high press, high line खेल रहे हैं, high risk, high reward. So what kind? Because अब टीम की आपने भी टीम के साथ इतना काम कर लिया है एंड टीम की भी इतनी एवोल्यूशन हो गई है कि मे बी वी कैन से कि अब ये स्टाइल्स खेले जा सकते हैं. मे बी मेंस नेशनल टीम के हम ये नहीं बोल सकते, इतनी कंटिन्यूटी उधर शायद उस टाइम पे नहीं आई हुई थी कि हम स्टीवन कॉन्स्टेंटाइन को बोलें कि यार आप सऊदी अरेबिया के खिलाफ फॉर एग्जांपल, और क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन भी बहुत ज़्यादा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि यार आप हाई प्रेस हाई लाइन खेल लो हमेशा या फिर लेट्स बिल्ड आउट फ्रॉम द बैक ऑल द टाइम. सो मे बी विद योर टीम वी कैन बिकॉज वी हैव सीन द एवोल्यूशन. So what can we expect in terms of that? I think again, like I said, it's all हमारा सारा जो system है वो based around कि पहले 5 मिनट में क्या होगा, दूसरे 5 मिनट में क्या होगा. Of course, we want to start at a high. We want to attack. We want to get behind. जैसे कि for example, I'll tell you what the game plan was जब हम लोग last time हमने खेला था. Last time हम जब खेल रहे थे इंडिया के साथ 2022 में, उसमें यही था कि हम लोग के पास we needed to sit back. We had to block. We were very defensive. और सिर्फ approach ये थी कि हम लोग उसको काउंटर पे अगर हो सकेगा तो हम उनको काउंटर पे देंगे. सो दैट हैज चेंज्ड क्वाइट अ बिट. देयर अगेन सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको पहले भी हमारे जो इंटरव्यूज में बोला है कि प्लेयर क्वालिटी भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती है. प्लेयर क्वालिटी इस दफ़ा हमारे पास बेहतर है फ्रॉम प्रीवियस टाइम्स, एंड उसके मुताबिक हमें अपने प्लेयर्स को देखते हुए हम जो चीज़ें कर रहे हैं उसमें हम लोग को फोकस रखना है. तो वेदर इट बी अ मिड ब्लॉक, आई थिंक वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि यार गेम सिचुएशन के मुताबिक अगर हमें वो लोग डोमिनेट कर रहे हैं, they're building out from the back all the time and they're very sharp at doing that, then we will drop into a mid block if we have to. And if not, if we see that there's an opportunity, if we smell something कि यार ये मिस्टेक होने वाली है, ट्रिगर्स हैं हमारे पास, क्यूज हैं, किस तरह क्यूज को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह उनको हम लोग उनके हाफ के अंदर ही प्रेस कर सकते हैं. सो ये सारी चीज़ें we all work on this thing. I think it's a matter of लाइनअप भी उनकी भी स्ट्रेंथ्स बहुत ज़्यादा है, उनके प्लेयर्स को हम जानते हैं अच्छी तरह, काफ़ी बाहर भी खेलती है प्लेयर्स. सो वी नो ऑल द प्लेयर्स एंड वी अंडरस्टैंड कि हम किस तरह किस प्लेयर को हमें हैंडल करना है. तो वी नीड टू कीप दैट इन माइंड एज वेल. इट्स नॉट ओनली अबाउट अस, इट्स अबाउट बोथ द टीम्स. तो आप वन ऑफ द फ्यू पीपल, लोग शायद बुरा माने, वन ऑफ द फ्यू पीपल इन पाकिस्तानी फुटबॉल जो काफ़ी मेथोडिकल हैं, जो काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड हैं. आई कैन काउंट ऑन वन हैंड, मे बी नॉट पूरा हाथ भी पूरा नहीं होगा जो इस तरह के लोग मैं गिन सकता हूँ. लेकिन आपके ख्याल में ये जो 10-12 दिन 15 दिन के कैंप होते हैं, इसमें इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी टैक्टिकली नुआंस्ड आइडियाज आगे बढ़ाना पॉसिबल होता है? ऑब्वियसली इट्स नॉट आइडियल, बट हाउ मच इज पॉसिबल विद इन दीज 15-20 डे कैंप्स? आई थिंक हमारा 15-20 डेज की बात करी आपने. आई थिंक यू राइट. आई थिंक
first of all, I think अगर आपकी टीम रेगुलरली फुटबॉल खेल रही होती है and they're in that season से निकले हुए हों या फिर already they've played a few matches, whatever it is, then it's easier for the coach to come and just connect the dots and just put them on. जैसे बाहर हमारे साथ होता ये है हर केस जगह नहीं है. दुनिया में जो होता है। जैसे बाहर होता है हमारे पास वो अभी तक हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है. और फॉर एग्जांपल हमने सारी फीफा विंडोज भी हम लोग नहीं खेलते. सो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी मिस हो गई हैं हमारे से. बट येट आई थिंक एंड ऑफ द डे आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, बट आई थिंक द प्लेयर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, प्लेयर की ब्रेन्स पे डिपेंड करता है कि कितना इन्फॉर्मेशन वो लोग इतने दिनों में ऑब्टेन कर सकते हैं और उसको एक्वायर कर सकते हैं. सो व्हाट वी डू इज़ वी ट्राई टू सिंप्लीफाई, जितनी चीज़ें हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको सिंप्लीफाई करके उनको वी डू इट इन प्रेजेंटेशंस, वी डू इट ऑन द फील्ड, वी मेक देम डू इट, वी शो देम. सो सारी जो टूल्स ऑफ टीचिंग हैं हम लोग उनको इस्तेमाल करते हुए we try to get the message across, and then we do practice matches where we see these things evolve and if they can get the ideas. So this is all the way we try to work and we try to fix this. There are a lot of concepts. I'll give you that. There's a lot of concepts that हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं, and I don't know how many of them will actually be executed on the day, but are we have to try. I mean, there's no way we cannot try. We have to try to do those things and try to execute the best capability, because this team is good enough to play, and there are so many things we can work on. And I've picked up a few things that I really want to focus on, and then there's a list of primary things, there's a list of secondary things, and after that depends on situation, match management. अगर जीत रहे हो तो किस तरह खेलना है, अगर हार रहे हो तो किस तरह खेलना है, ड्रॉ चल रहा है तो क्या करना है. सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स, सो ये सारी चीज़ें हमने माइंड में रखनी है और इस तरह लेके हम टीम को आगे बढ़ेंगे. बिल्कुल आपकी बात सही. आई थिंक इम्पोर्टेंट थिंग जिसलिए मैं ये चीज़ लेके आता हूँ इज बिकॉज आई थिंक आवाम को भी जनरली पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस को भी पता होनी चाहिए कि एक बहुत बड़ी कंस्ट्रेंट है. ऐसा नहीं होता, फीफा नहीं खेल रहे कि बस टीम मैनेजमेंट में जाके प्लेयर इकट्ठे किए और बाहर भेज दिया और सारे 6 प्लेयर बस खेलना शुरू हो गए. देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ दैट नीड्स टू बी डन प्रॉपर्ली, और आपके पास काफ़ी लिमिटेशंस होती हैं. अगर आपकी टीम एक तो रेगुलरली सीजन नहीं खेल रही, दूसरा 15 दिन का कैंप हो रहा है, तीसरा साल बाद खेल रही है प्रॉपर्ली इकट्ठे, और उसके अंदर आप जो भी चेंजेस वगैरह कहें वो भी होते हैं. तो टैक्टिकली तो हमने देख लिया, मे बी यूल डू अ लॉट ऑफ वीडियो सेशंस, मे बी यूल ट्राई टू कंडेंस दैट इन्फॉर्मेशन इन द बेस्ट वे पॉसिबल. फिजिकली दिल भाई वो तो थोड़ा एक चैलेंज होता है कि अगर प्लेयर्स अप टू स्पीड नहीं है तो वो एक ऐसी चीज़ है कि आप वीडियो वगैरह के थ्रू तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते. दैट समथिंग दैट रिक्वायर्स physical time on the pitch, in bringing them up to speed and in getting that aerobic and anaerobic sort of endurance in them. तो वो आप किस तरह कर रहे हैं इतनी शॉर्ट विंडो के अंदर? आई नो अभी एंड नेशनल वुमेन्स चैंपियनशिप हुई थी तो उसके अंदर प्लेयर्स खेले होंगे, सो दे आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, बट मे बी कंपेयर टू इंडिया एंड आई डोंट नो अबाउट बांग्लादेश, वो लोग काफी रिदम में होंगे फिजिकल भी और वैसे भी. तो what's the way around that? That's a simple way for me. I stay in touch with my players throughout the year. I don't, I don't go to sleep when, जो चीज़ें नहीं हो रही. जब एक साल के लिए हम लोग नहीं खेल रहे इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सो रहे थे. As soon as we found out about the SAFF championship in June, we have a group of a pool of player का group है हमारे पास जिसमें सारे players मौजूद हैं. उनको हमने testing दी हुई है. उनको हमने we tell them how to test themselves on 4 or 5 different tests, whether it be agility, speed, endurance, and all of those things. And then we also give them ideas, and they have a proper plan on how to execute those things as well. So unki deadline submissions hoti hain. For example, from June to today, they had 5 deadlines, so that means they had to submit their test 5 times before they come to camp. And they did that. Most of the players have done that. जो regularly खेल रहे हैं उनको थोड़ा सा leeway होता है because they're playing for their teams. But rest of them, they have to deliver. They have to give me the results. So when they come to camp, I don't want to stress them out with high physical, things. It should be based around football. But we do test them here, and we do work on a lot of fitness stuff as well. But it's more endurance building so that they can perform better with the ball. Of course, it's all with the ball, but वही आपको at least sport specific endurance तो आपकी होनी चाहिए. So I'm glad कि they're doing that on their own time. But if I look at it also
if I ask you on a separate note, strategically, आपने कहा कि हम we're good enough now that we can sort of not play that same low block approach that we did last time जब हम इंडिया से खेले. तो इस मैच के अंदर या जनरली मैं ग्रुप स्टेज की अगर बात करूं, आप क्या स्ट्रेटेजिकली देख रहे हैं कि हम किस तरह को, आर यू बीइंग pragmatic about it is my question, while still sort of praying to true to your principles in the sense के are you saying maybe if we get a draw versus India and then look to win against Bangladesh, जो कि ज़्यादा पॉसिबल हो, मे बी, आई डोंट नो, तो हमारे पास क्वालिफाई करने का चांस होगा क्योंकि आई थिंक आउट ऑफ 3 टीम्स 2 आगे जा रही हैं. तो आर यू लुकिंग एट इट थ्रू दैट एस्पेक्ट, या आर यू सेइंग कि यार मैं अपनी फुटबॉल खेलना चाहता हूँ एज मच एज आई कैन एंड वी आर गोइंग टू लुक टू विन एवरी गेम एंड इट्स just that's my approach for every game, or are you looking at it from a more of a points group stage perspective? Yeah, I think it's a mix of both. जिस तरह आपने define किया उसको, but I'm very true to my principles, or try to be at least. So, and my thinking has always been that results are always a consequence of how you play, and how you execute your football. So मेरे लिए वो बड़ी important चीज़ है कि किस तरह हम लोग खेलते हैं, and how do we overcome the situations जिसमें हम लोग we can break the defensive lines and go behind them and try to score goals. So that's important. That we can't take that away. And again, we're still comparatively a new team. और हम लोग सही है, we want to win. Of course, everybody wants to win, but we still have to develop an identity of how we play. And उस identity को साथ लेते हुए, we can build from there. So still we're 2 years old. उसमें से भी 1 साल आप निकालने, तो 1 साल हमने खेला है फुटबॉल, उसके बाद 1 साल नहीं खेला, और हम लोग 1 साल के बाद वापस आ रहे हैं. But I will still want to just showcase that we have worked on a lot of things. We have worked on some principles, some concepts that we want to execute on the match day, और हम लोग करेंगे. But we are still cautious of the fact that India is a good team. Bangladesh is an even better team. I think people who think that India is better than Bangladesh is yeah, because they won it last time. They're a good team. Bangladesh, I think, is a better team. So we have a very tough competition. But yeah, we want to play the way we play, and we want to go and try to beat them. And that's what's going to happen. I'm not going in to kind of look for just draws. Of course, we want to go win. And again, if we don't win, we don't want to lose. That's the second approach, right? So that's it. That's how we approach these 2 matches. और यही 2 matches हैं हमारे पास, इसके अलावा we will not get a third chance. So we have to hit the ground running. तो मतलब कि जैसे ही whistle बजती है, we have to be ready to just take it on. That's it. तो हम इस टूर्नामेंट में एज पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस क्या तवक्को रख सकते हैं, मतलब हम क्वालिफाई कर सकते हैं नॉकआउट्स के लिए? इज दैट समथिंग रियलिस्टिक? Oh, that is the ambition. That's the ambition कि हम लोग कोशिश करके get out of this group, preferably on top. If not, then whatever, we can try to get there. But there has to be growth. There has to be that कि हमने जितनी मेहनत करी है over the past 2 years, that has to. This is our, like we've talked about in our team, this is our biggest thing that we can do. So this is our World Cup, or whatever you want to call it. In the grand scheme of things, SAFF Championship isn't the most recognized thing in the world, but for us it is very, very important. As Pakistanis, as South Asians, this is a very good competition. Uski kafi heritage bhi hai, matlab ke, it's been there for a very long time, and players have played it. We've done well in the past, then we became average, and now we've tried to build it up again. So these सारी चीजें, we keep that in mind when we're building. And if I talk about the squad, obviously काफी आपने बताया है कि 2 साल में इवॉल्व हुआ है, और आपने नेशनल वुमेन्स चैंपियनशिप के बाद भी कुछ हमने कोई और नए चेहरे भी स्क्वाड के अंदर देखे हैं. तो आपको नेशनल वुमेन्स चैंपियनशिप जो अभी रिसेंट हुई है, इसके अंदर सबसे ज्यादा किन प्लेयर्स ने इम्प्रेस किया था, या किन प्लेयर्स ने सरप्राइज किया है, जो शायद आपने कहा अच्छा हो, दिस इज समथिंग this is a player that I can look at maybe? If I'm being very, 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 very honest with you, I don't think there was any surprises for me in this National Women's Championship. Is also because I think वही वाली बात जो हमने पहले की थी कि players only perform when, or try to work hard जब हमारा कोई tournament आ रहा होता है, which rightly so, which because of our system we don't or continue working ourselves. So right before the tournament, people start working. Right before, like 10 दिन 12 दिन पहले, they start working, but उनकी fitness levels are less. There's no ball time. They don't get good things on the ball, as in good touches on the ball, or they've played matches.
And I speak to a lot of players, a lot of coaches. They don't really prepare the way they're supposed to prepare. So there was no real surprise for me in terms of कि यार oh wow, this is a shock player that I missed out on. ऐसा कोई situation नहीं थी. We knew exactly the players that are going to be high performing players, and those are the players that performed high. And then I mean, आपने भी देखा होगा, सुना होगा लोगों से कि यार which were the players who performed well in the championship, and those players are part of the team. Yeah, as they should be, I think. But I have to ask you, Adil bhai, because I think एक लोगों का सवाल होता है और I think it's मेरा फर्ज बनता है पूछना, आप उसको जैसे भी जवाब देना चाहें. Which is कि does being part of Karachi FC affect your judgment in any way? Like, and also linked to this is, do you think? I mean, we can talk about whether it does or does not affect. Like, it doesn't matter what I think, but do you think the second part of the question is, do you think it's unfair for people to bring up this potential conflict of interest? No, I think it's. I mean, if I was on the other side of the boat, I would probably be probably thinking the same thing, and it's a natural phenomena. And I'm not shy of answering this question. I am very categoric. Like I know, I understand कि मैं Karachi City के साथ भी I work, but I can easily differentiate between what I want for the national team and what I want for the Karachi City Football Club team. मेरे लिए it's a very clear pathway. There is no, at least from my side, and I don't know what people will say and think. At least it's very clear for me कि यार मुझे किस तरह के players national team के लिए चाहिए. There are many players in Karachi City Football Club who are not in this team. So and it would be, I don't think, yeah, people are still questioning me, and I could have still, like, for example, been like, 10 player और भी रख लेता, तो they would have still, the same questions would have been there, but that's not the case. And again, I think Shahzeb se jab aapki baat hui thi, he was talking to you about how we get affected as a club. So that's always the case, and that's going to happen. And the reason why that happens is because I'm not biased towards the players. I'm just focused on the players who जो perform कर रहे हैं better, right? Whatever that might be. So अगर आपकी performance levels high नहीं है, you will not make the team. Doesn't matter who you are, whether you're my brother or you're not. I'm not doing this for myself. I'm very patriotic. I'm very passionate about football, and I think Pakistan national team के लिए अगर जो player आना चाहता है, they need to fully deserve the spot. So जो भी high performance players थे उसके अंदर we tried to pick them out. Everybody, of course, every coach has their own little, कि किस तरह ये player better था, इसको pick करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था. It happens across the world. But end of the day, according to what I want and what my game model will look like, I need to pick up players based on that. जहाँ तक कराची सिटी की बात करते हैं, I think they were, I mean, the most highest performing players in the National Women's Championship, undoubtedly, uncontested. So that's not why they're there. They're there because they performed well. They keep performing well, and again, I'll add both the things कि उनकी testings भी जो होती है, we can see the testings में भी कि which players perform better in physical performances and football performances. तो वो सब चीजें we keep it together, and I think एक अच्छा सवाल है. It's not like I don't mind the सवाल at all. I think it's clear in my mind कि किस तरह के players मैं चाहता हूँ team के अंदर, but there is no such thing as being biased towards my club because I can easily differentiate between the two, and I know people, मुझे क्या फायदा? It's मेरे लिए कोई personal, they're not paying me or whatever to be in the team. So I'm just trying to help Pakistan as much as I can. And what would you say to people who maybe would say that some of the treatment of senior players could have been better, or maybe they were treated unfairly? Maybe Hajra Khan comes to mind. Or can you elaborate on that? What would you have to say about that? देखिए, I'll be very honest with you guys. Please do, because I appreciate that about I want people to understand what's happening. Yes, that's why I'm asking. Yeah, I think I think we talk about senior players जो 2010 या जब भी women's team बनी थी उस वक्त आए थे. आपने recent interviews भी सुने होंगे 2-3 जो कि हमारे senior players के हैं, and उसके अंदर भी आप as a football person you will try to understand what they're saying.
is how did they manage to get into the national team? आप ये देखें ना. I मैंने वो believe इंटरव्यूज देखे टू बी that ऑनेस्ट, आई मे बी यू कैन टेल मी व्हाट they were saying like in a roundabout way. I have no idea. so they say that okay हम लोग गए and हम कुछ टूर्नामेंट चल रहा था and किसी ने बोला कि आके खेल लो and हमने शॉट मारा तो हमारी किक बहुत अच्छी थी and it went in the goal. So I believe football found them. It wasn't that they found football. There's a big difference between understanding that, so अगर फुटबॉल आपको ढूंढ रहा है because हमारी कंट्री में फुटबॉल नहीं था उस वक्त, so we picked up good athletes who can kick a ball, who can run, who can shoot the ball nicely into the goal, but that's it. When it comes to people trying to find football, then the mental side comes in. कि किस तरह खेलना है, मुझे क्या चीज़ें करनी है to become a better football player, concepts क्या हैं, ये सारी चीज़ें we have to start thinking about these things. So I believe that, good, bad or ugly, the players who were in the past were the first generation of football players in Pakistan, and those guys were found by football, not the other way around. So, recently players have retired, they have moved on, who are not a part of the squad. This is because this might be too much for them, because they were athletes first and not football players. That's fine. If that I makes agree. sense. I 100%. So for example, अगर आप मेंस नेशनल टीम को भी देखें, शहजाद अनवर आए. शहजाद अनवर ने मेरे ख्याल से एग्जैक्टली उसी तरह का 19-20 हर कोच का फर्क होता है, बट he made the sort of squad or picked the sort of players that Stephen Constantine ने भी ज्यादा कुछ नहीं चेंज किया. So I think we can also say Shahzad Anwar did the right thing. He picked the players that I would pick, maybe you would pick, most of them. Hamdan would pick, Kareem Yeah. Karai would pick, Stephen Constantine pick. We would all pick these same general group of players. 19-20 आप अगर Right. ऊपर नीचे कर लें. But the thing that I really applaud him for is कि he looked at the future and said, यार unfortunately पाकिस्तान फुटबॉल ने जो ज्यादतियां की हैं, हाजरा खान के साथ की, फॉर एग्जांपल क्या उसे कहते हैं, मलिका नूर के साथ की, सदाम हुसैन के साथ की, सादुल्ला के साथ की, ये ज्यादतियां हुई हैं क्योंकि पिछले 10 साल में फुटबॉल टर्मोइल में था, इनके पीक ईयर्स चले गए, ठीक है, हुई. But now we have to look forward, and for that we need the likes of, for example, Alamgir. We need the likes of Waleed Khan. We need the likes of Mamoon Musa. Like we need हमारे अगली जनरेशन को हमने बिल्ड करना है ताकि उनपे हम अगली, क्योंकि हमने अगली टीम बनानी है 5-6 साल के लिए. ऐसे तो नहीं हो सकता कि अब हम एक नए सिरे से शुरू करें तो पुराने प्लेयर जो हैं उनसे शुरू करें. they'll be done in a couple of years anyway. They're past their peak. So I agree with you there कि 100% I see कि आपने एक टीम बनानी है. और बाय द वे आई थिंक क्या किसी को आपकी सिलेक्शन पे वैसे भी क्वेश्चन इंडिविजुअली करना नहीं चाहिए. दे शुड ओनली जज यू बेस्ड ऑन द ग्रोथ दैट यू आर अचीविंग एंड एट द एंड ऑफ द डे ओवर अ लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम ऑन द रिजल्ट्स. सो फॉर एग्जांपल गैरेथ साउथगेट ने ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड नहीं रखा, दैट्स हिज प्रोगेटिव, बट Gareth Southgate should be judged on the results that England are getting, and then if he doesn't get it, then I think people will say, "यार Trent को भी रख लेते," for example, which is common, right? So I'm Yeah, just saying that that's all well and good. But do you think when people say that they weren't treated right, what exactly do they mean? Because I'm not sure myself. I'm actually asking you genuinely. And where would you say that the treatment was right or wrong, or what happened? I think they believe that, I think, I don't know, कोई हमारी कोई ऐसा नहीं है कि we had a fight or कोई मुंह मारी हुई है या फिर कुछ गलत हुआ है. Nothing of that sort happened. At least in my book, it did not happen. And on the record, I don't think there's anything of the sort that we can say, okay, this thing happened between X and Y and Z. I think they believe that we moved on quite fast from that. Just like you said, the new generation of people, our strategic plan was to get in younger players, keep a few players जो experienced थे, उनको रखेंगे हम लोग. Maybe I think what we could have done is handled it better in terms of, and that could be our fault, whether we go and speak to them about it. But I think 8 years is a long time. So people do move on. And if you're not there's nothing that we owe them really in terms of an explanation. It's based on performance. Agar aapki performance is high hai, to of course, you will be part of the team and you're good enough to play. And again, the last bit is that, again, mera jo game model, the way I want the team to play,
it has to match them, and it has to match them. If they're not matching my game model, it becomes very tough for them to be part of the team. And I think those are the things that I think that annoyed them. मेरे लिए football is priority, and I just can't have people just because I upset them a little bit. That's not how I work. I mean, I'm trying to build a team here. This is not a fun thing for me. Um, Absolutely fair. I think I wanted to ask you these questions directly because I think, yeah, I wanted your perspective on it. I know you to be an honest person, so I thought maybe why not just ask you directly because ये No, बातें go आपको ahead. पता है That's why इर्द I'm गिर्द here. चलती रहती हैं. Yeah, absolutely. So Yeah. just one last thing before I let you go. I know you're busy with training and everything. पाकिस्तान विमेंस टीम का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस टूर्नामेंट के बाद? मतलब इस टीम को हम लॉन्ग टर्म कहाँ देख सकते हैं? आप कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फीफा रैंकिंग्स हमारी बेहतर हो जाए. वी वांट टू गेट हायर इन द रैंकिंग्स, and for that we need to be playing regular football. Um, but all depends on when the elections happen and what happens in December, January, May with PFF. That will also direct us, largely किस तरफ जा रहे हैं, क्या करना है, किस तरह उनका प्लान है, क्या स्ट्रेटेजिक प्लान बना रहे हैं वो लोग 5 साल का, 6 साल का, एंड उसके मुताबिक काम होगा. बट आई कैन ओनली से दैट वी नीड टू बिल्ड फ्रॉम हियर. हमारी कोशिश होनी चाहिए कि AFC की भी ग्रुप्स आएंगे फॉर द वर्ल्ड कप, उसमें अच्छा करें. For just try to get as high as possible in the rankings, at least dominate South Asia in the next 3-4 years, and then build on the greater part of Asia, and then from there on we can look at global stuff. But it has to be, for me, अगर मैं खुद plan बनाने के लिए जाऊँ तो it has to be like a 5-year plan, and then a 10-year plan, and then a 25-year plan जिसके अंदर हम लोग का next 5 years dominate South Asia. उसके बाद 10 years extension पे लेके जाएं तो आप उसको dominate Asia or try to dominate Asia, and then after 25 years you're looking at a global performances and all of that thing. It has to be a long-term approach. It cannot be short-term, and for that whatever we do now is very important. तो ये लॉन्ग टर्म अप्रोच ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल इकोसिस्टम के अंदर घड़ी होती है. तो अभी आपने इलेक्शंस की बात की, क्या आपको कोई खौफ है या जनरल कोई खौफ है कि, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है आम है, अगली पार्टी आ जाती है और फिर पिछली पार्टी वाले सारे, जो पिछली पार्टी के साथ जो लिंक्ड सारे लोग होते हैं, बाय लिंक्ड आई मीन जो उनके साथ काम कर रहे हैं व्हाटएवर, उनको वो कहते हैं कि जी आप साइड पे हो जाएं. तो I mean, I would hate to see that, but do Yeah, you I see mean, that's a do you very fear something like that happening? Of course we do. As people, we do fear a lot of things. But I mean, as far as I'm talking about myself, I think I've always tried to not get involved in the political side of things. मैंने कभी भी politics के बारे में बात ही नहीं करी है, ना मुझे कुछ पता है इनके बारे में. I don't even know most of these players and most of these candidates या जो भी है. I'm here for football. जो भी elected body होगी, FIFA based, FIFA के अंदर, I will be happy to work if they allow me to. If they don't, then good luck to whoever the new coach is. I believe that I've set up a foundation for the new coach if it comes in, and if it's still myself, then I can build from there. If not, then whoever the new coach is can will have a good platform to work from. But yeah, I think again, हम लोग जो भी, my advice would be whoever जो भी next आता है, we need to think about how to improve football and make a long-term plan. It cannot be a short-term plan. But yeah, it's very possible that जब change हो जाता है तो people think that you're going to be part. अगर आप इसके बंदे हो, no, क्या बंदे यार, जो चीज टूटी भी नहीं है उसको फिक्स ना करें ना. जो he fixes things that are broken. So for example, league है, या फिर आपके पास there's so many different things that you can fix versus what's not already working fine. So yeah, I don't know what's going to happen in January, February, but अभी के लिए तो we're still focused on what in the present moment, and inshallah जब नया जो भी आएगा, जो भी होगा आगे जाके, I wish them the best of luck, and I hope that we can continue working the way we have been working for the last 2 years.
यस एब्सोल्युटली। आई होप कि कंटिन्यूटी रहे। आई वो ये आपकी वाली बात है कि और इतनी चीज़ें फिक्स करने वाली, जो एक चीज़ साइड पे थोड़ी बहुत चल रही है आप उसको चलने दो, बाकी चीज़ें कर लो। बट ये थोड़ा मसला है कि पाकिस्तान में काश ही सारे कोई इस तरह स्ट्रेटेजिकली या रैशनली सोचते होते, अगर सोचते होते तो हम शायद आज इधर ना खड़े होते। बट हियर्स टू Mhm. होपिंग। एनीवे अदिल भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर टेकिंग आउट द टाइम। हमेशा बहुत Oh, thank you so अच्छा much. लगता है आपको शो पे लेके and to discuss these things with you. And thank you for your honest answers and candid replies. और टीम को और आपको best of luck for the tournament. We'll all be cheering you on. Hopefully we can get a win against India. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हरकतों के बाद अब फुटबॉल की तरफ ही अब हम देखते हैं कि शायद कुछ पाकिस्तान इंडिया में यहाँ पे कुछ अच्छा मिल जाए हमें। तो मे बी यू कैन डू नहीं व्हाट नहीं द क्रिकेट टीम couldn't do. The इंडिया है। इंशाल्लाह आई थिंक विल ट्राई आवर बेस्ट आई थिंक हम लोग वी आर इन द राइट माइंडसेट एट द मोमेंट हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग पाकिस्तान को कोई चीज़ we give them something to cheer for. I know there's a lot of political turmoil and halat is not good and those things add up. And sports is a way to bridge that gap. And I think अगर हम लोग इंशाल्लाह and that's what I tell the team कि अगर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग एक high performance day for at least in that match. एंड बाकी वी कैन लीव इट टू गॉड टू कि क्या होगा, हारे के जीतेंगे, बट एफर्टफुल होनी चाहिए। 200% एफर्ट डालेंगे, कोशिश होगी कि हम लोग हर चीज़ में अपना बेस्ट करें एंड कम बैक विद द रिजल्ट एंड होपफुली कम बैक विद द ट्रॉफी ऑफ गॉड विलिंग। Ladies and gentlemen, this was Adeel Rizki. We were talking about the upcoming SAFF Women's Championship and particularly Pakistan versus India, जो कि 17th अक्टूबर को होगा नेपाल के अंदर। Do watch Pakistani football women's teams matches 17th को, like I said, इंडिया के खिलाफ, फिर उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ, and hopefully after that, hopefully inshallah, knockout matches maybe once we qualify. We will have those matches as well. So please support the team and get behind them. Inshallah, they're going to try their best, and hopefully, all of us will have something to cheer about starting from 17th October. This was Ismail Farooq with the Rizki. Until next time, take it easy. Allah.